व्हाट आर यू सीइंग ऑन द ग्राउंड कि इंडिया में इन चीज़ों का इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है? एंड क्योंकि आप 2008-9 से काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हाउ हैव यू सीन दिस स्पेस इवॉल्विंग ओवर द ईयर्स? तो जिस स्टेज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्टेज में यूजुअली बहुत कंपनीज जो है प्री रेवेन्यू स्टेज में ही हैं। So what is the entire checklist or the procedure that one follows till the investment is closed, and sometimes maybe investment को आप let go भी कर देते होंगे because कभी-कभी complications भी हो जाती होंगी। तो एक सिंपल चेकलिस्ट वे में क्या-क्या स्टेप्स होते हैं उसके दिन इम्पोर्टेंट? वंस यू हैव क्रैक द कोड, आपने एक बार उसको सेट कर दिया, आप समझ गए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, यूज़ कैसे होता है, वो बेसिकली एक तरह का इंजीनियरिंग गुड कैटेगरी में आ जाएगा। Typically, what is the holding period for a company in this type of investing? And what's the horizon one has to take when they do this type of investing? Ather very deliberately took a bottom up approach, Yeah. जो आज के दिन में आई थिंक इज पेइंग ऑफ फॉर दैट। Hi investors, welcome to SOIC. So in today's podcast, we'll be hosting Mr. Rajiv Mantri from Navam Capital. So there are ना कैटेगरी 2 AIF जो डीप टेक इन्वेस्टिंग करता है। अब डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स की हमने कभी भी इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं करी और वेंचर कैपिटल की भी हमने कोई वीडियो नहीं करी। तो डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? सो दीज आर इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे कोई आईपी रिलेटेड मोट हो, यानी वो ऐसी कंपनीज हों जो बहुत सालों से आर&डी कर रही हैं एंड कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं जिसमें एक आईपी रिलेटेड मोट हो, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड दीज आर कंपनीज यूजुअली जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर्स बन जाती हैं, या फिर दीज आर कंपनीज जिनकी होम ग्रोन टेक होती है एकदम। फॉर एग्जांपल जो हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, एक ईवी कंपनी है, एक ड्रोन कंपनी है और एक सप्लाई चेन रोबोटिक्स कंपनी है विच हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस। तो वी हैव नेवर डिस्कस अनलिस्टेड बिजनेसेस एंड दिस डीप टेक थॉट प्रोसेस की डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं। सो वी आर होस्टिंग मिस्टर राजीव मंत्री, एंड आइडिया ऑफ दिस सेशन इज कि हम जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के ऐसे पॉडकास्ट करें, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ लेक्चरर एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस वेर ही टॉक्स अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो इन दिस पॉडकास्ट वी विल लर्न अबाउट कि इंडिया में डीप टेक्स इकोसिस्टम कैसे क्रिएट हो रहा है, कौन-कौन से बिज़नेसेस डीप टेक इकोसिस्टम के अंदर और किस टाइप के बिज़नेसेस होते हैं। देन इंडिया में कैपेबिलिटी बिल्डिंग कैसे हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन वी विल आल्सो डू दिस चेकलिस्ट की वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती कैसे। तो एनीवन हू वांट्स टू लर्न कि कैसे स्टार्टअप इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड होती है, तो उसकी प्रोसेस चेकलिस्ट क्या होती है। देन ही विल आल्सो डू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़। एक लिस्टेड कंपनी की केस स्टडी है जो अनलिस्टेड से लिस्टेड हुई है। एंड देन देयर आर अदर 2 कंपनीज़ जहाँ पे देयर इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जो स्वॉर्म ड्रोन शोज़ जो होते हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, एंड इट्स अ डीप टेक कंपनी व्हिच इज India's own homegrown business. So these type of businesses and these type of case studies will do, and you'll get a complete 101 class on what are deep tech investments and India में ecosystem कैसे develop हो रहा है। With this, let's start. So today we have Mr. Rajiv Mantri with us. And in this podcast, I am personally very fascinated and excited because डीप टेक एक ऐसा एरिया है जो एक जो कंट्रीज सुपर पावर की तरफ जाती है, वहाँ पे डीप टेक इज़ एन एरिया विच फाइंड्स अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस। एंड डीप टेक के थ्रू ही अगर हम इंडिया में देखते हैं आज जो भी $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनी, तो पहले सीमेंट स्टील इंडस्ट्री थी, फिर बैंकिंग इंडस्ट्री आई, फाइनेंशियल इंडस्ट्री आई। बट अब जो आने वाला टाइम है, अगर इंडिया को $4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन तक जाना है, तो टेक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज या डीप टेक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के थ्रू ही इंडिया की डेवलपमेंट आगे और हो सकती है। तो टू अंडरस्टैंड दिस स्पेस वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड गेस्ट विद अस, एंड सर क्योंकि इसी एरिया में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो दैट इज समथिंग दैट वी विल लर्न अबाउट इन द पॉडकास्ट। तो राजीव जी, फर्स्ट क्वेश्चन विच आई स्टार्ट विद कि आई थिंक काफ़ी सारी जो हमारी ऑडियंस है लिस्टेड स्पेस में इन्वेस्टिंग करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीप टेक स्पेस है क्या, एंड इंडिया में इसका इकोसिस्टम बेसिकली कैसे इंडियन इकोनॉमी में इसका इकोसिस्टम इस टाइम पे डेवलप हो रहा है। Thank you, Ishmohit, for having me on the program. So deep tech, I would say simply is any type of venture. A deep tech venture is any venture which is harnessing intellectual property and engineering-led approach in developing products and services. तो जहाँ पर भी कोई स्टार्टअप है या कोई कंपनी है जो एक तरह से एक आईपी ड्रिवन आईपी लेड अप्रोच ले रही है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए, नहीं। उसको हम लोग डीप टेक बोल सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स एंड कैटेगरीज
these types of startups and companies are coming from areas like semiconductor chip design, defense technology and aerospace, space technology, of course, also robotics and industrial automation, climate technology, biotechnology, and pharmaceuticals. Right. So, in a broad sense, anything derived from physics, chemistry, and biology, and maybe maths and computer science, you can say anything which is derived from that, where one can see in the product or service that somewhere the application of those natural sciences and mathematics is making a impact in creating something differentiated, creating something unique, which is delighting the customer, the buyer, in a way which would not be possible otherwise. Right. I think that could be called a deep tech venture. What is usually different in these companies? कि ये कंपनी डिफरेंट कैसे होती है फ्रॉम अ नॉर्मल लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और नॉर्मल इंजीनियर्ड गुड कंपनी? सो आई वुड से इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब खास करके जो अपने पब्लिक मार्केट्स में देखते हैं, राइट. तो वो ज़्यादातर उस तरह की कंपनीज है जहाँ पे एक सर्टेन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ नोन, एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक उसमें एस्टैब्लिश हो गया है और वो कंपनी उसको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर रही है। राइट. सो आई वुड से ज़्यादातर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं इंजीनियरिंग गुड्स स्पेस में, उस तरह की कंपनीज़ रहती है कि सपोज़ कोई ऑटो कंपोनेंट्स में है राइट. या कोई कैपिटल गुड्स में है, तो अगर वो कैपिटल गुड कंपनी कोई पावर इक्विपमेंट बना रही है, जो पावर जनरेशन कंपनीज़ जो हैं उन लोग खरीद रहे हैं, तो दोज़ आर वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल नोन टाइप्स ऑफ products where reliability matters, where cost matters. Because B2B, obviously, the sensitivity of cost is there. So those types of companies are oriented on, I would say, process excellence. Whereas the types of companies that we are mentioning about when we say Right. deep tech ventures, they definitely have a more product focus, and frequently they are doing something which has not been probably tried before. Something novel is being done, something truly innovative and breakthroughs being done in that sense. It could be some new type of chip design, or it could also be a new type of automation application in a certain context, which has not been tried before or done before at a certain scale. So there is a certain novelty attached to it. और होता ही है कि जैसे-जैसे चीज़ें एस्टैब्लिश होती जाती है, वो भी इंजीनियरिंग गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब राइट. वन्स यू हैव क्रैक्ड द कोड, आपने एक बार उसको सेट कर दिया, आप समझ गए कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, यूज़ कैसे होता है, वो बेसिकली एक तरह का इंजीनियरिंग गुड कैटेगरी में आ जाएगा। काफ़ी सारी कंपनीज़ आई थिंक क्योंकि हम लिस्टेड स्पेस में देखते हैं तो कंपनी के भी स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के। आई थिंक कुछ अर्ली स्टेज होती हैं, कुछ फिर ग्रोथ स्टेज में आती हैं, फिर कुछ मैच्योर हो जाती हैं। तो जनरली दीज़ कंपनीज़ आर अर्ली स्टेज टू प्री कंसेप्चुअलाइज़ेशन स्टेज की प्रोडक्ट अभी आर-एन-डी होके बन रहे हैं इस टाइम पे। तो जिस स्टेज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस स्टेज में यूजुअली बहुत कंपनीज़ जो है प्री रेवेन्यू स्टेज में ही हैं। प्री रेवेन्यू प्री स्टेज। रेवेन्यू मतलब उनका कोई कस्टमर भी नहीं है अभी, पर डेफ़िनिटली एक सर्टेन प्रोडक्ट आइडिया है, एक कस्टमर एंगेजमेंट चल रहा होगा, कि जैसे उन लोग बात कर रहे हैं कस्टमर से या कस्टमर इज़ इंटरेस्टेड। It could be a B2B customer, it could be B2G customer. The government could be a buyer or enterprises could be buyers. Typically in deep tech, I would say it is either B2B or B2G. राइट. They are engaging closely with the customer, but they haven't made anything which is saleable as yet. और अर्ली स्टेज में उन लोग फंडिंग इसीलिए लेते हैं कि उन लोग कुछ बनाना चाह रहे हैं। राइट. सपोज़ कुछ बनाने के लिए कंपोनेंट्स खरीदने हैं या फिर कोई कैपिटल इक्विपमेंट खरीदना है या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके लिए दे आर रेजिंग फंड्स। और यूजुअली वन कैन वैलिडेट एट द वेरी अर्ली स्टेज कि ठीक है, अगर ये बनाना है तो ये कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, उसमें उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। राइट. और जब हम लोग डिलीजेंस भी करते हैं तो हम लोग ये सभी एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग एंगल से कि अगर ये चीज़ अगर बन जाएगी तो इसको लेने वाला कौन होगा, इंडिया में कौन खरीदेगा, क्या ये एक्सपोर्ट हो सकता है, अगर एक्सपोर्ट होगा तो उसमें फिर दूसरे कंपेरेटर्स भी कौन है, कहाँ से आएंगे, राइट. उनकी क्या एडवांटेजेस है। Of course, they could also be already selling in India, so one has to carefully benchmark the proposed product against what is already available. मतलब जैसे मतलब पीयर टू पीयर एनालिसिस आप हाँ, पूरा देखते हो एक मतलब दूसरे one has to benchmark carefully कि अगर ये है तो उसका अल्टरनेटिव क्या है और वो अल्टरनेटिव के कंपैरिजन में ये नई चीज़ जो है ये क्यों काम करेगी और पे। क्यों अच्छा काम करेगी और लोग क्यों खरीदना चाहेंगे। राइट। तो राजीव जी इसमें एक और रहता है कि यार मतलब
क्योंकि जनरली जो हम इन्वेस्टर्स देखते हैं तो एवरीवन हैज़ अ व्यू कि यार इंडिया इज़ अ सर्विसेज ड्रिवन इकोनॉमी या इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज़ अ आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट। So, anyone who's watching this and क्योंकि आप तो इस स्पेस में डीपली इन्वॉल्व है, यू मीट दीज कंपनीज आई थिंक अभी आप दिल्ली भी आए हैं, किसी कंपनी से ही प्रॉब्ली मिले होंगे साथ साथ। तो व्हाट आर यू सीइंग ऑन द ग्राउंड कि इंडिया में इन चीज़ों का इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है? एंड क्योंकि आप 2008-9 से काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हाउ हैव यू सीन दिस स्पेस इवॉल्विंग ओवर द इयर्स? एक सबसे बड़ा जो चेंज आया है लास्ट 15-20 साल में, वो मैं ये बोलूँगा कि पहले हमारा इम्पोर्टर माइंडसेट था। तो वी नेवर हैड द इंटेंट और इंक्लिनेशन कि वी हैव टू डेवलप दिस in the country, make this in the country. So 2014, 2015 onwards, obviously, Make in India has got a major push. Right. Some of the results of that are visible in areas like electronics, in particular. The smartphone production has really scaled up in India, राइट। and now the value chain is also coming up. हाँ, एक आई थिंक एप्पल इन इंडिया का पीछे मैं एक वो पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग था। एक एप्पल इन चाइना बुक आई है, हुँ, तो वैसे ही उसपे एक रिसर्च नोट आया था एप्पल इन इंडिया का। हाँ, So they were talking about how the Apple, whenever whichever country they go to, they develop an ecosystem, and some of the machine manufacturers also for smartphone are absolutely. now coming up in India. That's the interesting thing. And uh, like it's not just we look at Apple, right? But behind Apple, there are dozens and dozens of hundreds of suppliers actually Right, who are feeding into Apple's production presence here, and the rapid scale up which Apple has had in last 5-6 years, something unprecedented. I don't think they scaled this fast even in China. right, And of course, we have seen the story in defense. We've seen it play out in public markets, like the push for indigenizing defense production, the push for making India an exporter of defense products. So all of that actually feeds into the deep tech ecosystem, where let's say when you start making advanced electronics and defense items in the country, तो उसके साथ साथ जो अलग-अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं या फिर कंपोनेंट्स हैं, right. वो भी सब धीरे-धीरे लोग बोलेंगे अच्छा इसको भी बनाया जाए इंडिया में। एक तरह से सप्लाई चेन रेज़िलियंस के लिए भी ऑनशोर किया जाए। तो राजीव जी, क्या ये कहना सही होगा कि डीप टेक एक्चुअली रिलेट्स टू दोज सेक्टर्स जो एक तो इंडिया में अप एंड कमिंग है, एंड ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत रिक्वायर्ड है, एंड हो सकता है वो सप्लाई चेन या इकोसिस्टम का कहीं न कहीं पार्ट हो, एंड ऐसा प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही हो जहाँ पे उस प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करना मुश्किल है, या तो उस प्रोडक्ट इज़ वेरी आर-एन-डी इंटेंसिव। आई थिंक ऑल ऑफ योर पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली करेक्ट। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और इसमें मैं खाली एक और चीज़ ऐड कर दूँगा कि जहाँ पे नॉलेज बेस्ड और ह्यूमन कैपिटल बेस्ड एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। राइट, तो दीज़ आर ऑल नॉलेज इंडस्ट्रीज़। करेक्ट, 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 तो इसमें जो जो कंट्रीब्यूशन इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, दैट इज़ डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पोर्टेंट। राइट, राइट, मतलब ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज़ देयर इज़ अ सर्टेन टेक्निकल टैलेंट पूल अवेलेबल इन आवर कंट्री। राइट, एंड अब क्या हो रहा है कि दैट टैलेंट पूल is getting connected up with certain risk capital at the right stage. So let's say, and we were talking about the changes which have helped to expand deep tech ecosystem. राइट, I would say shifting away from importer mindset is one of them at an economy level. The second aspect would be availability of risk capital. कि पहले अगर सपोज कोई स्टार्टअप को अगर 3 करोड़ या 5 करोड़ रुपए चाहिए थे एंजल फंडिंग या सीड फंडिंग के जैसे, तो वो मिलना बहुत मुश्किल था। मतलब 10-15 साल पहले तो बहुत ही मुश्किल था। अब क्या हो गया है कि हर स्टेज में हमारे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में हुँ, आपको कैपिटल मिल सकता है। तो अगर आपको मतलब अर्ली स्टेज कैपिटल चाहिए, लेट्स से यू वांट 3 करोड़ और इवन 7-8 करोड़ रुपीस एज़ अ सीड राउंड, दैट इज़ अवेलेबल। अगर कोई स्टार्टअप को 20-30 करोड़ रुपए रेज़ करने हैं, उसके लिए भी देयर आर फंड्स अवेलेबल। राइट, देयर आर यूएचएनआईज़ हू आर पार्टिसिपेटिंग। देयर आर इन फैक्ट आई नो पर्सनली आल्सो मैनी very accomplished stock market, equity market investors who are themselves become angels and coming into unlisted space because they are seeing the parallels कि suppose किसी ने listed space में कोई company में over a 7-8 year period they've done very well in that. So they are seeing the same kind of story and the same kind of product category grow and scale up in the unlisted side, and they're saying why we should restrict ourselves only to the listed category. राइट, राइट।
So second thing is wider participation of Indian rupee capital into the ecosystem. So whether it is, I was saying 20-30 crore rounds are also happening. जी Then 200 crore rounds are happening. Then today the Indian market is so deep, both in the unlisted space and of course the listed space, that you can hold an IPO for 700 crore rupees, 800 crore rupees if you're so qualified, or you can raise that capital privately as well. राइट So that entire capital market ecosystem has really grown in our country, which is I think a tremendous plus. या आई थिंक बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स भी देखते हैं कि इवेंचुअली अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना दें हाँ, and we make a growing company, though eventually there's a part to get it listed also, like definitely, it's a free and fair market which also exists. definitely. So that equity side, I think we have solved for. Right. I think the in my view, one gap which remains is on the credit side. Right. तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बनाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड सम डिग्री ऑफ इक्विटी कैपिटल, बट यू ऑल्सो नीड क्रेडिट. वी नीड फंक्शनल banking sector, like a deep wide functional credit ecosystem enabled by the banking sector. Right. तो अपने यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या रहा है कि बैंकिंग सेक्टर हैज़ बिन आइदर रनिंग अ ओपन टैप फ्री फॉर ऑल, कि कोई भी आके लोन लेके जा रहा है, और आइदर शट्स द टैप एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट लोन्स. Right. So, to I think grow and scale the manufacturing ecosystem deeper, India requires certain types of credit reforms and credit enablement. Right. तो उसमें भी जैसे we have been reading about efforts in digital public infrastructure, using GST kind of information to provide credit to a company. For individuals, also using UPI and payments information to check their kind of credit worthiness. Right. So all these digitalization efforts somewhere feed into the making for a better credit ecosystem in the country, but somewhere that is not realized as yet. So let's say a company today is looking to put up a 30-40 crore manufacturing expansion. तो उनको वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन करने के लिए शायद इतनी आसानी से क्रेडिट नहीं मिले Right. जो मिलना चाहिए. मतलब अगर मैं कोई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, उसमें कैपिटल इक्विपमेंट ले रहा हूँ, तो मैं उसको इक्विटी से क्यों फंड करूँ? Correct. जहाँ पे हार्ड एसेट्स लगा रहे हैं, वहाँ पे एक एक क्रेडिट फैसिलिटी भी रहनी चाहिए, Right. पर हमारे बैंकिंग सिस्टम में वो जल्दी से मिलता नहीं है. तो दोज़ टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स आई थिंक आर नेसेसरी नाउ Right. टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल. I think a lot of times जो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है अनलिस्टेड का, तो आई सीन कि समटाइम्स कंपनीज आल्सो कम टू रेज इक्विटी कैपिटल टू फंड द वर्किंग कैपिटल. एग्ज़ैक्टली. तो मतलब दैट जस्ट टेल्स यू कि व्हाई इज़न्ट द बैंकिंग सिस्टम डूइंग दिस? राइट. What are our banks and NBFCs doing? Like there is a huge credit gap in the country. And वो वर्किंग कैपिटल ट्रैप्स जो है, मतलब एक तो है कि पेमेंट्स वो टाइम से होने चाहिए, राइट. जो नहीं होता है. दूसरा ये भी है कि अगर वो कोई कारण से नई पेमेंट्स रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए कोई इक्विटी फंडिंग क्यों ले रहा है? राइट. राइट. मतलब इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कैपिटल, एंड यू आर टेकिंग दैट फ्रॉम द मार्केट, डाइल्यूटिंग योरसेल्फ एज अ promoter and founder. But that is the alternative that the business operator is left with. Now, before going forward in this video, so what we do at SOIC membership is that we teach you about multiple aspects of investing, which makes you a complete investor. पहले हम लेवल 1 में सिखाते हैं all about financial literacy and what are the tools that you can use to look at mutual funds, index investing and कैसे आप अपनी asset allocation कर सकते हैं. In level 2, what we teach you how to do fundamental analysis and how to find fundamentally strong businesses. In level 3, we teach you all about how to find intrinsic value of stocks. तो हमारा वैल्यूएशन का कोर्स काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है. In level 4, we teach you about when to buy and when to sell. This is a stock framework that you can develop after watching this course कि आप टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं इस कोर्स को देखने में. लेवल 5 में टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग एंड लेवल 6 में भी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है. इसके साथ एडेड बोनसेस में क्या है कि देयर इज अ मास्टर क्लास इन इन्वेस्टिंग यूजिंग एआई, कि आप एआई को यूज करके मार्केट डैशबोर्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे समराइज कर सकते हैं फास्ट वे में, कॉन कॉल्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, विच इज एन एडेड बोनस ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप. इसके साथ साथ एक एडेड बोनस और है, दैट इज मार्केट सिग्नल्स, जहाँ पे हम फोर्टनाइटली टॉप डाउन मार्केट एनालिसिस करते हैं एंड वी गिव यू एन इनसाइट कि मार्केट्स में अभी क्या चल रहा है. If you also want to register for the SOIC Masterclass in AI course separately, which has a library of prompts, the link to register is there in the description box below. But if you want it as an added bonus in the SOIC membership, you can use the coupon code
SOIC AI 10 to register for the SOIC membership, and इसके साथ साथ आपको स्टॉक स्कैन्स का भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज इंक्लूडेड इन दी SOIC membership as a one time limited offer. With this, let's go back to the video. तो राजीव जी, अभी तक तो हमने सीखा कि मतलब डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है, किस टाइप ऑफ सेक्टर्स में होती है, एंड इंडिया में इकोसिस्टम कैसे क्रिएट हो रहा है. Now my next question is कि because a lot of students are there, a lot of people who have not like seen venture capital की कैसे वर्क करता है या cat 2 funds कैसे वर्क करते हैं. तो एक क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट जर्नी कि सपोज यू सिलेक्ट अ कंपनी, तो व्हाट इज द एंटायर चेकलिस्ट और द प्रोसीजर दैट वन फॉलोज टिल द इन्वेस्टमेंट इज क्लोज्ड, एंड समटाइम्स मे बी इन्वेस्टमेंट को आप लेट गो भी कर देते होंगे बिकॉज कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती होंगी. तो एक सिंपल चेकलिस्ट वे में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व. So the way we filter is we look for three attributes that we want to assess very deeply. So the three attributes are team, technology and market. राइट. एंड ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से स्टेज की कंपनी को देख रहे हैं. तो इनमें से तीन में से किसको कितनी वेटेज मिलनी चाहिए स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का. तो ऐसे अगर बहुत अर्ली स्टेज कंपनी है, सपोज एकदम कोई बहुत यंग टीम है जो कोई इंक्यूबेटर में है और 2-4 लोग ही हैं शायद उस कंपनी में, तो फिर टीम बहुत मैटर करती है राइट. कि ये टीम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सही क्यों है. उनके पास ऐसी क्या यूनिक स्किल्स हैं और एक पर्टिकुलर स्किल या नॉलेज बैकग्राउंड है जिससे उन लोग ये पूरा कर पाएंगे और जो आगे का जो 5-7 साल का रास्ता है बाकी दूसरे कंपेरेटर्स से अच्छा क्यों कर पाएंगे. तो टीम रियली मैटर्स एट द वेरी वेरी अर्ली स्टेज. देन ऑफ कोर्स वन डज अ वेरी डीप आईपी एंड टेक्निकल डिलिजेंस. तो जैसे हमारा फंड एक डीप टेक स्पेशलिस्ट फंड है, तो हम लोग बहुत समय इसमें देते हैं कि ये आईपी और ये प्रोडक्ट टेक्निकली डिफरेंशिएटेड कैसे है राइट. और क्या वो सस्टेनेबल डिफरेंशिएशन रहेगा. तो जैसे अगर आप कोई चीज़ को लैब स्केल में बना रहे हैं, तो लैब स्केल से उसको एक सर्टेन इंडस्ट्रियल स्केल में जाने के लिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हम्म. तो क्या वो हो सकता है एक सर्टेन सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स में, एक सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरेबिलिटी के साथ? क्योंकि शायद अगर आप उसकी 10 यूनिट या 10,000 यूनिट बनाने जाएँगे, तो वो शायद प्रोसेस साइड में भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा. कि स्केल हो सकता है, नहीं हो सकता. हाँ, मतलब अगर किसी ने 5 यूनिट बना लिए, राइट. तो 5 के 50 कैसे होंगे? 50 के 5,000 कैसे होंगे? तो फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है. एग्ज़ैक्टली, सप्लाई चेन का क्या एक्सपोज़र है? उसके कंपोनेंट्स कहाँ से आएँगे? उसका वेंडर बेस कैसा रहेगा? तो वो सब एक तरह से एनालाइज़ करना पड़ता है. राइट. तो दैट इज़ आई वुड से पार्ट ऑफ आईपी एंड टेक्नो कमर्शियल डिलिजेंस, राइट. एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. राइट. तो एंड द थर्ड पार्ट इज़ ऑब्वियसली द मार्केट. तो मार्केट बेस्ड रिसर्च जो है कि अगर ये सब बन गया, तो कौन राइट. खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? राइट. What is the reason to switch from, let's say, some other alternative which they have today? What benefit is the customer getting? राइट. तो इसमें basically we talk to the buyers. राइट. We ask the potential buyers or the existing buyers कि आप क्यों खरीद रहे हैं? मतलब जिसको हम मतलब लिस्टेड शेयर्स में चैनल चेक्स कहते हैं. हाँ, precisely. So in a way it is like channel checks, but in this domain, often if something new is being made, राइट. so buyer can have a lot of suspicions कि अच्छा ठीक है, सुनने में तो अच्छा है. How will it work in practice? राइट. What is the reliability? And what is the predictability of supply? क्योंकि naturally कोई भी enterprise या government buyer जो होगा, they'll want to deal with suppliers कि ये कहीं जाएगा नहीं. मतलब ये छोटी कंपनी है, तो एक कभी-कभी लोगों को डाउट होता है कि अगर अगर मैं इसके साथ जाऊँ, मैं इनको बिज़नेस दूँ, तो क्या ये 2 साल बाद रहेंगे? राइट. So राइट. definitely from a buyer's perspective, that risk is there assessing for that. And that is where I think having the right credibility in the team, having very good technology, having good shareholder base, good funds backing a startup gives confidence to a buyer. राइट. कि yes, this company is here to stay, राइट. and maybe I can do business with them if they can actually give me this at this price point, which helps me solve this particular pain point. तो ये सारी चीज़ें मिल के एक डिलिजेंस होता है और काफ़ी आइटरेटिव भी होता है. राइट. ऐसा नहीं कि ये हो गया तो फिर मतलब एक ही बार होना है और वो एक 5 स्टेप कर दिए तो हो गया. तो often it requires multiple calls, discussions, tapping our own network. We have a very wide network in Indian industry, also in the regulatory ecosystem, also among like different academic institutions. तो हर एंगल से हम लोग एक
प्रोडक्ट को या टेक्नोलॉजी को परखते हैं, ये कैसे चलेगा, क्यों राइट, चलेगा, राइट। और इस तरह से आइटरेटिवली उसमें काम करने के बाद वी कम टू अ कंक्लूजन कि ठीक है, दिस मेक सेंस और दिस डजंट मेक सेंस। इसमें राजीव जी ये तो अपना हुआ डिलिजेंस ऑन द एस्पेक्ट कि या क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली तो सबकी कंपनी मेक सेंस और नॉट, बट ऐसे आई थिंक आइडिया पाइपलाइन की जनरेशन कैसे होती है इसमें अगर समझे तो? तो आई वुड से आइडिया पाइपलाइन, सोर्सिंग जिसको बोलते हैं, जी, जी, जी। sourcing of prospects and startups like that. I think a very strong, powerful funnel for us today is our own existing portfolio. ओके, So जैसे हमारे आज के दिन में टोटल पोर्टफोलियो कंपनीज जो हो गई है, प्रॉब्ली 20 के ऊपर हो गई है राइट, अक्रॉस ऑल आर फंड्स एंड व्हीकल्स। तो उसमें 30-40 फाउंडर्स आर देयर, राइट, प्रॉब्ली 40 प्लस फाउंडर्स आर देयर who are working in the front lines of the knowledge industries we are interested in. So often those founders themselves will tell us, कि, okay, we are seeing this pain point, or we heard about this startup. You should talk to them. They are looking to raise money. So much of it is coming in from those kind of channels. तो नेटवर्किंग के थ्रू हाँ, बेसिकली। मतलब through own network, portfolio companies, and industry contacts that we have. राइट, I would say that is a very strong signal provider, kind of deal flow and prospects like that. राइट, तो ये एक सोर्स है। सेकंड इज़ कि वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद सर्टेन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्यूबेटर्स, राइट, व्हिच आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ दिस टाइप। राइट, तो इस तरह की जो डीप टेक स्टार्टअप्स है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स में भी चालू होती है। राइट, फिर ऐसे आज के दिन में सारे आईआईटीज़ जो हैं, एनआईटीज़ जो हैं, सीएसआईआर लैब्स हैं, तो ये सारा जो इकोसिस्टम है कंट्री में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पुश एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी किया है कि खाली आर-एन-डी करना काफ़ी नहीं है, उसको कमर्शियलाइज़ करो। राइट, क्योंकि ये मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं पब्लिक पब्लिक फंडिंग ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स पॉइंट इज़ कि खाली आप लोग फंडिंग ले रहे हो, कर क्या रहे हो उसके साथ? राइट, राइट, इंडस्ट्री के साथ काम करो, जाके बिज़नेसेस के साथ जुड़ो, या फिर खुद अपना बिज़नेस बनाओ। राइट। आई थिंक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो। मतलब देयर इज़ अ वेरी क्लियर मैंडेट लाइक दिस, व्हिच इज़ गोइंग डाउन फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम एंटिटीज़ लाइक एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, टू द फ्रंटलाइन institutes and research labs. राइट, So hence they become like very, very powerful breeding grounds. राइट, So someone who's a MS PhD student, someone who's even doing their bachelor's in engineering. So today it has genuinely become a career option for a lot of people, that instead of let's say taking a job somewhere, let me think of starting up, because all the enabling uh, support is being provided at different incubators, at different types of venture building institutions now at some of these universities. राइट, So someone can probably get a grant of like 10, 20, 30 lakhs to get started. They can register the company, they can basically get into business. और फिर उसके बाद उन लोग अपना अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अपना और प्रोग्रेस करते हैं, फिर कोई एंजल फंडिंग मिल जाता है। फिर जैसे अपने बात कर रहे थे कि रिस्क कैपिटल इकोसिस्टम है, राइट, तो एंजल सीड फंडिंग आती है, अर्ली स्टेज वेंचर फंडिंग आती है, और फिर वहाँ से बिज़नेस बढ़ते जाता है आगे। और ये सारे देश में हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2-3 आईआईटी में हो रहा है खाली। राइट, आई कैन टेल यू इट्स हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री। मतलब वी आर मीटिंग कंपनीज फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम यू नो आसाम टू कर्नाटका टू पंजाब टू Tamil Nadu to Maharashtra, of course, and Gujarat. I mean, every state, every region like that is now doing this. In fact, many states have also started their own promotional programs. राइट। जैसे स्टार्टअप इंडिया बना था, जी, जी, जी। वैसे अलग-अलग स्टेट्स ने अपना-अपना बना लिया टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। तो इसमें राजीव जी एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम अप्रोच देखते हैं तो आपने बताया कि लाइक आइडिया सोर्सिंग आपने बताया। पर अगर मैं अप्रोच को ब्रॉडली अगर टर्म्स में डालना चाहूँगा, अगर कोई ऐसे टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग को देख रहे हैं, तो व्हाट विल बी द स्टेप्स? मे बी आइडिया सोर्सिंग, मे बी देन योर ओन डिलिजेंस, देन फाइनेंशियल डिलिजेंस, क्वांटिटेटिव डिलिजेंस और लीगल ड्यू डिलिजेंस। तो वो प्रोसेस वाइज़ स्टेप बाय स्टेप तो क्या रहते हैं जनरली इफ समवन इज़ लुकिंग एट दिस स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम? Let's say when we meet a startup, या uh, like we start engaging with them on those parameters like I mentioned. तो उनमें हम उनको परखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट, कैसे बनेगी ये चीज़, इसमें आईपी क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी क्या है।
तो सारे पैरामीटर्स में वी ट्राई टू असेस देम एंड इट हैपेंस इन अ आइटरेटिव फॉर्मेट लाइक आई सेड। कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कभी-कभी और टाइम लगता है। तो उसमें बातचीत होती रहती है और वी कीप रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, वी कीप टॉकिंग टू देम। Sometimes we connect them to a prospective customer, राइट, even when we're not invested. We introduce them to people we know who are potential users of the product, buyers of the product. They give us their feedback कि इसमें क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्यों यूज़फुल होगा या क्यों नहीं होगा। राइट, So that is the first step. Like we are basically trying to assess in the first step कि do we want to invest in this company or not? राइट, And then once we have made a decision like that, then obviously it comes down to agreeing upon some valuation, entry valuation for the fund, where we want to, let's say, invest X crore rupees and have Y percentage ownership and so on. So that becomes like the negotiation between us and the company, राइट, where we both try to agree, कि, okay, this is the valuation and this is where we want to participate at. राइट, And then along with that, we also try to bring something to the table, which is something more than money. राइट, So that I think all good venture funds try to do in terms of like business connects, assistance with business development, assistance with other parts of the company's growth, राइट, the organizational growth. So it could be bringing in right type of even external experts, which the company may require. राइट, Because again, for the type of ventures we are funding, sometimes that, let's say, scientific expert is required, राइट, राइट, राइट। and they may not be a full-time person, but they could be an advisor or a consultant. मतलब एक्सपर्ट कॉल टाइप की आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ, कॉल ही नहीं, पर कभी-कभी जैसे सपोज़ कोई कंपनी सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन में है जी, और उनकी एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक कमर्शियलाइज़ेशन एंड इवन कस्टमर डेवलपमेंट। So we bring in someone from the industry who can help the founders with राइट, that particular problem. So it राइट, gets very specific in that domain, and that's where I think the network and the reach that we bring to the table that matters. इस So that's the second राइट, step where we kind of do that level of let's say agreeing on a valuation and terms and so on. राइट, And the third step is something which is more familiar to, let's say, financial investors, which is the due diligence step. कि आपने एक टर्म शीट कर ली, सारे टर्म्स रिकॉर्ड कर लिए और फिर उसके बाद डीडी वगैरह होती है, लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, just to make sure everything is in order, hygiene factors are in place, let's say there are no hidden liabilities or any kind of unpaid dues or something like that, or obviously no legal court cases. And on the legal due diligence side, like all the compliances are in place. राइट, So ROC compliances, other types of compliances. In some cases where, let's say, a startup has accepted funding from abroad, there are certain types of RBI reporting and compliances. So all of that is checked thoroughly. And I would say that due diligence phase is the last step. And if everything checks out, then we proceed with the investment after doing the definitive documentation based on the inputs of the due diligence. राइट, So definitive documentation is basically जो terms finalize किए गए हैं term sheet में, valuation etc. उसको आप एक definitive shareholder agreement और share subscription agreement में capture करते हैं जी, और whether they are new investors, existing investors, or of course the company itself, all the parties sign off on that document, and then the round is closed. So mechanistically, this is how it works. I would say first step is obviously sourcing, filtering, decision making. Second step is discussion, negotiation on terms and valuation and so on. And third step is diligence and closing. राइट, राइट। तो बेसिकली अगर मैं वैल्यू चेन को डिकोड करूँ, लाइक आई थिंक बिकॉज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर लाइक क्योंकि कैट 2 इज़ अ न्यू कैटेगरी जो इंडिया में बन रही है या फिर डीप टेक इन्वेस्टमेंट्स इज़ अ न्यू कैटेगरी। तो जैसे कैट 2 फंड है, उसमें एलपीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, राइट? एंड कैट 2 फंड आइडिया सोर्सिंग करते हैं अपने नेटवर्क यूज़ करके या फिर हुँ। कभी-कभी थ्रू द सेम फाउंडर्स के नेटवर्क के थ्रू। हुँ। सो सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़, फिर आइडियाज़ की डिलिजेंस होती है। अगर डिलिजेंस में फेल हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा तो वैसे ही ट्रैश कैन में गया आइडिया, या तो अगर हमें अच्छा लगा तो हम आगे जाते हैं। और अगर ऐसा ऐसा नहीं कि हम उसको आइडिया को डिलीट करेंगे, क्या पता उन फाउंडर्स को अच्छी जगह कहीं पे इकोसिस्टम में कनेक्ट भी करा दें। देन आप बेसिकली डिलिजेंस करते हैं जिसमें आप क्वांटिटेटिव डिलिजेंस करते हैं कि टाइम क्या है इस कंपनी का, वेदर इट स्टैंड्स टू बी समथिंग व्हिच इज़ वर्थव्हाइल और नॉट, यहाँ हुँ। पे मतलब कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। हाँ, तो I would say that is the second step. दैट्स ऑन सेकंड स्टेप। हाँ, once we have decided कि okay, this is something potentially valuable, we try to put numbers around it. राइट,
एंड दैट्स हाउ वी अराइव एट अ वैल्यूएशन एज वेल, राइट, कि अच्छा इसमें मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे हैं, रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट्स ऐसे लग रहे हैं, तो आज इसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। राइट, राइट। तो डिलिजेंस में फिर एफडीडी, हाँ, तो उसके बाद फिर फाइनल स्टेज में एफडीडी। लीगल एंड फाइनेंशियल डिलिजेंस। गॉट सो कमर्शियल डिलिजेंस जो पहले होता है, और फिर जो टर्म्स एग्री हो जाते हैं उसके बाद फिर फाइनल स्टेज में लीगल एंड फाइनेंशियल डिलिजेंस एज वेल एज द डॉक्यूमेंटेशन। एंड देन शेयर होल्डर्स एग्री विद इट। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, यस। गॉट इट। एंड पोस्ट द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डन, उसके बाद फिर हैंड होल्डिंग एंड हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर इज समथिंग दैट ऑल वेंचर कैपिटल्स लाइक फंड्स। हाँ, हाँ, so this is somewhere a running joke also in the VC industry that people make claims, right? I'm here to help you. राइट, 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 So there's something of a running joke also in the VC industry that VCs, make claims but don't help. राइट, But I think the good ones do contribute. राइट, राइट, And of course we try to sort of communicate that to the founders when we are engaging with them. Right. So like I said, on the point of like B2B connects, kind of regulatory connects, other types of support which we can give, we try to in fact show the founders what we are able to do for them before we sort of engage more deeply as well. एंड इसमें राजीव जी, पोस्ट द इन्वेस्टमेंट इज डन, राइट? तो आई थिंक हेल्प तो हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कनेक्ट करा रहे हैं। तो उसका कंपनीज की भी चॉइसेस होती हैं, राइट? कि कंपनीज वेदर दे शुड गो फॉर मोर फंडिंग राउंड्स और दे शुड गो फॉर लिस्टिंग मे बी 5-6 years 7 years डाउन द लाइन। तो इंटायर अगर मैं साइकिल लूँ, राइट, तो टिपिकली व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड फॉर अ कंपनी इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड व्हाट्स द होराइजन वन हैज टू टेक व्हेन दे डू दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग? So every category 2 fund has a finite life. राइट, So it's a closed-ended fund. Typically, early stage funds would have a 8 or 10 year life. राइट, And that is the kind of phase in which a fund has to deploy capital, drive and assess the growth of its portfolio, and then harvest capital. राइट। So all of it has to happen in that window. 5 to 10 years। हाँ, और वो एक फिक्स्ड विंडो है, उसको आप बदल नहीं सकते। राइट, राइट, तो इसलिए फंड स्ट्रक्चर जो होता है एक रिजिड टाइमलाइन में चलता है, राइट, कि उसमें ज़्यादा लीवे नहीं रहता है। मतलब रेगुलेटर डजंट गिव यू, सेबी व्हिच इज़ द रेगुलेटर ऑफ द इंडस्ट्री, डजंट गिव यू दैट लीवे टू, लेट्स से, एक्सटेंड द फंड लाइफ बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। राइट, So every fund is required to abide by that, and hence, like, things have to really happen within that window itself. Hence the value adds that we are kind of talking about, and growth we are talking about, is on a particular very tight timeline. राइट, राइट, कि राइट, year to year, this is what we want to deliver. राइट, So it, in a way, I think it's a good thing also because it really focuses everybody कि ये 3 साल में इतना होना ही है, या राइट, फिर we have to work on it collaboratively and kind of come together. Whoever the major shareholders are, it could be like a few funds, could be even some of the, let's say, smaller investors, and work together with the founders, formulate like the business development and growth strategy, and try to implement that within that time frame. राइट, राइट, And of course, everyone tries to pull their weight. Like from the investor side, we try to all contribute. Well, let's say we are more than one fund is invested, everyone tries to bring something to the table and say that, this is what we are helping to grow this company. So everyone's incentives in that sense are very properly aligned. अलाइन्ड इन दैट सेंस, राइट, क्योंकि सबकी उसी तरह का फंड स्ट्रक्चर है, राइट। उसी टाइम में कंप्लीट करना है। तो राजीव जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अभी अपने तो चेकलिस्ट टाइप स्ट्रक्चर समझ लिया कि यार कैट 2 फंड्स में या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जनरली कैसे होती हैं। तो अभी एक हमारा क्वेश्चन आता है केस स्टडीज़ का कि डीप टेक के अंदर इफ़ यू हैव एनी केस स्टडीज़ टू शेयर जो आपने पर्सनली विटनेस करी हो लास्ट 5 टू 6 ईयर्स से, या सम ऑफ द इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस दैट यू वुड हैव सीन कि कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, या फिर अभी इस टाइम पे अच्छा कर रहे हो बिज़नेसेस? नहीं तो इसमें जो भी अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की हैं, तो जैसे वी टॉक्ड अबाउट डीप टेक सेक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आर chip design, aerospace and defense tech, robotics and automation, climate tech, biotech. So राइट, all these industries that we're talking about, इन सारी इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली हर तरह की कंपनीज है, बट जैसे हम लोग अपने फिल्टरिंग और सोर्सिंग प्रोसेस के बारे में जब बात किए थे, नॉट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली बिकम सक्सेसफुल और आर वेरी स्केलेबल, एंड वी बिलीव दैट ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइक progress, sustainability and scale only comes from genuine IP led differentiation.
So now if we talk about a few specific examples of this, so let me take you back to the 2019-2020 period and the electric vehicle industry at that point. तो उसमें like there were obviously many players and many new entrants also emerged. Probably at some point in that 2020 onward era of EV market and its growth, कोई समय में शायद 60-70 कंपनी हो गई थी राइट जो सब ईवी में थी। कोई ना कोई अलग-अलग तरह की टू व्हीलर्स बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एंड a lot of people did not know how to separate or understand what is actually happening here, and how does one say, right, like of these 60 odd companies, which one of them will actually sustain themselves? So of course today the market is much more consolidated. There's been a major shakeout, and probably one of the shining stars that has come out in the last 5-6 years in two-wheeler electric vehicles is Ather Energy. So if we look back over the last 5 to 7 years period, so why did Ather succeed? राइट What was the driving sort of factor which really made them stand out and also made them very, very effective competitors in that market which had so many players? And I would point to their emphasis on engineering and R&D. राइट So the fact that this company, which was started at IIT Madras by two young engineers, Tarun Mehta and Swapnil Jain, has managed to today hold its own ground against even giants like TVS and Bajaj, who have come into the sector now in the last few years. The reason they've been able to do that is because of their, since inception, they've had this focus on having own product development, own R&D, and own engineering, both on Right. software and hardware. So that is what has helped them differentiate their product. And once upon a time, they had less than 2% market share. Today, they are having over 18% market share. Yeah. And they've taken market share from others, other incumbents also, and also new entrants who are more noisy, who are more, bombastic, if I can use that word. But Ather has quietly been investing in its own product, building a very, very differentiated product, which allows them to charge something higher in the marketplace. So Ather bikes are usually more expensive, but customers are willing to pay. At least the product doesn't catch fire. और उसका कारण ये है, मतलब सेफ्टी इज वन पार्ट ऑफ Yeah. बट इवन परफॉर्मेंस, उसका कारण ये है कि consistently they have been taking that same track for a long time. Others were not so focused on this aspect. They were just like make and sell, including some of the assemblers. Like there Right. were companies which were just doing pure assembly. I mean, one can not call them also EV manufacturers by any stretch of imagination. It would be like Scott McNeely, the CEO of Sun Microsystems, had once used this analogy. Someone asked him about Dell as a competitor. So he had said Dell is like the 7-Eleven of computers. He said, would you consider 7-Eleven to be a retailer, or would you consider 7-Eleven to be a product company? Right. And he said 7-Eleven is a retailer, and so is Dell. Because Dell is not having any content, any IP of its own. Right. It is simply assembling PCs and retailing them, Correct. which is what the vast majority of EV companies were doing. And of course, assembly and retailing can be a good business. But if you're a new entrant in a high growth industry, it's probably not a sustainable way to build your position and hold your position in that sector. So as and when the giants chose to enter, people like Hero Motors and Bajaj and TVS, well, chances are they will be better at manufacturing, assembly and distribution and selling than any new entrant will. उनकी जो बैलेंस शीट है, उनका जो ब्रांड है, उनकी जो नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, उसके अगेंस्ट में कोई कैसे compete करेगा? That is not the vector which Ather chose to compete on. It chose to compete on a vector of like product quality, differentiated features and differentiated offerings, and R&D driven control of the manufacturing and technology. Right. So when you put all of that together, you get a product which is able to charge 30 to 50% more compared to other alternatives in the market, Right. Right. and you have customers who are willing to pay.
if I had to give one example of an archetype of a great kind of engineering-driven deep tech company in India, which has been built in the last 5 to 10 years, I would say it is Ather Energy. Right. And now the performance of the company is also speaking for itself. For a long time, some people were saying that Ather pioneered this category, but now others have taken it. Well, I think the results are now speaking for themselves. Yes, I To think my mind, it was never I never had any doubt on this, by the way, that they would hold their own. Having known the team and having seen it from an early stage, I always had very high confidence. And even though the market share numbers optically looked what they were, it was simply a function of Ather not having distribution right. in vast part of the country. So now that they're building the distribution, the market share is also following. What other companies have done is they did it the other way around. They build distribution first, and then they're trying to fill that distribution With a good product. with some product. Yeah. I don't even know if one can say it's a good product. Yeah. With some product, fill the distribution, and somehow things will happen. But Ather very deliberately took a bottom-up approach. Yeah. जो आज के दिन में I think is paying off for them. Right. तो मतलब I think it's one of the only companies which is growing in triple digits in the two-wheeler EV space. I think last 2-3 months the growth has been just crazy. 120-130% volume growth. No, and it's on the back of simply opening distribution, right? Yeah. So they're adding new retail locations and experience centers. वहाँ लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसी बाइक है, Correct. समझ रहे हैं कि अच्छा इसमें एक सर्टेन क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, डिफरेंशिएटेड फीचर्स हैं, एंड उनको लग रहा है कि ये इट्स वर्थ पेइंग फॉर. Right. Because I think one more mistake which a lot of companies try to make in the sector, they try to view the two-wheeler only as a utility. Make it as cheap as possible. But somewhere one should also realize that it's also an aspirational product. Like someone is graduating from a bicycle to a two-wheeler, right? So they want something nice. Just the way someone going from a two-wheeler to a four-wheeler wants something nice, right? They will not want to be seen Yeah. as, just get a car which can call itself a car, which is why I think Tata Nano was not very successful. Right. They had a major branding issue. Right. So the difference between a Ather bike and another bike today in the market is very clear. Ather has a brand of its own. People know that it is a premium positioned product. So there is a certain signaling also, which a consumer who wants to do that is able to do. Right. And this all is coming on the back of promoters' orientation towards doing R&D and developing a product जहाँ पे उनका IPO and सिर्फ Absolutely. assembling नहीं कर रहे वो लोग. Absolutely. तो उन्होंने मतलब सालों तक इसमें emphasis किया कि we will develop our own IP, we will develop our own technology, and that is why they are able to compete Right. against companies which have like much bigger balance sheets, decades old brands, nationwide distribution. I mean, this is one of the reasons why people were skeptical of Ather. How will they compete? Right. But the fact is, they're not competing on distribution. They're not competing on balance sheet. They're competing on product and IP. Right. And that is, I think, where every good deep tech company has to compete. Because today, if you're a drone player, if you're, let's say, developing Swarm drones or other types of drones, and let's say Adani Defense enters the market or L&T Defense enters the market, I mean, there's no way that a new entrant can compete with a giant like that Right. based on their balance sheet, based on their reach into government, their influence as well, and their ability to kind of bring together best technology from across the world via joint ventures and so on. Right. So if you're a new entrant in that sector, you have to beat the best. And the good news is India can do that. The good news is we have the engineers, we have the technical talent in the country. Like we discussed, human capital is one of the greatest strengths of our economy, of our country. Right. So when you kind of bring together that human capital with certain risk capital and give the entrepreneurs space to operate and a mandate to deliver something, I'm pretty sure that almost anything can be done. Right. Because the really funny thing is, if you explore some of these larger multinationals from whom India has traditionally been importing technology, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे भी सब इंडियंस ही काम कर रहे हैं. वहाँ पे भी सब मतलब मिड लेवल इंजीनियर्स, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स ज़्यादातर जो हैं, दे आर एजुकेटेड एट इंडियन इंस्टीट्यूशंस
or they have got some training from India and then abroad and then they have joined here. राइट। So if they can do it there, why can't they do it here? तो इसमें राजीव जी एक तो इधर की आपने हमें केस स्टडी बड़े अच्छे से दी कि ईवी स्पेस में था एंड आई थिंक अब तो लिस्टेड कंपनी बन गई है इधर। Hmm. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर फैसिनेटिंग बिजनेसेस दैट यू आर सीइंग कि यार ये डिफरेंट स्पेसेस में दे आर इमर्जिंग वेदर इट्स अ ड्रोन लैंडस्केप और अ ग्रीन एनर्जी लैंडस्केप और अ सप्लाई चेन समथिंग टाइप लैंडस्केप? So I think there is so much happening which really energizes one when one is engaging with these companies and entrepreneurs. राइट। Really makes one very optimistic and energetic about where the country is going and what is being built here. So इसमें I can point to 1-2 more examples. We had funded a company called Botlab Dynamics राइट। along with some other investors in the Series A round. And Botlab is today a world leader in swarm drones. स्वॉर्म ड्रोन्स में? Swarm drones. तो छोटे वाले ड्रोन्स होते हैं? छोटे वाले drones जो होते हैं और उनका मेन यूज़ केस जो है आपने देखा होगा ड्रोन लाइट शोज़ होते हैं। राइट, राइट, राइट। बहुत स्पेक्टेक्युलर मतलब विजुअली इम्प्रेसिव और बहुत इंट्रिकेट होते हैं। यूजुअली तो हमने चाइना की वीडियोस देखी है, ड्रैगन आर फ्लाइंग टुगेदर लाइक हाँ, यहाँ स्वॉर्म तो ड्रोन्स में। उनका कॉम्पिटिशन उनके साथ ही है। तो वो चाइनीज़ ड्रोन प्लेयर्स हैं और बॉटलैब जो है इंडिया से आईआईटी दिल्ली से स्पिन आउट की हुई कंपनी है। राइट। फाउंडर्स जो हैं आईआईटी दिल्ली से ही हैं। तो उन्होंने जो बनाया स्वॉर्म ड्रोन्स जो डेवलप किए हैं, दे आर एबल टू डेवलप एंड डिलीवर ड्रोन शोज़ विथ 7,000 and 9,000 drones at a time. So the technical complexity of taking these small sized drones, having them in a synchronous manner, राइट। create a certain artwork or a visual in the night sky. It's a very complex problem to resolve, which they've done. So in fact, they are competing with some of the uh, Chinese leaders, and they've had this like kind of competition going on where sometimes it's a Chinese player which gets the world record, then Botlab takes the record for having the highest number of drones. ऐसे करके there's a genuine like back and forth going on. वेरी इंटरेस्टिंग। And they have done a I think remarkable job with this category drone light shows. I mean people also don't see the applicability of the IP made from the drone light shows into defense domain. या क्योंकि अगर आप हजारों ड्रोन को इस तरह से करेक्ट। आप कर पा रहे हैं ड्रोन शो फॉर्मेट में, तो वो सेम चीज़ आप डिफेंस एप्लीकेशंस भी लगा सकते हैं। राइट, That same know-how say IP translates राइट। quite nicely. Hmm. आई थिंक So I think this will be a company which people will be hearing about a lot more. राइट। And और ये ऐसी कंपनी है जो which is completely made in India. Again, they are not doing assembly. So they are having a very intensive R&D and product approach. They own their own IP and genuine innovation which is built right here in fact in Delhi. And one of the big breakthroughs they had in fact was the first big contract which Potlab got was doing the light show for Republic Day Parade. वेरी इंटरेस्टिंग। So उन्होंने उसका लाइट शो सबसे पहले किया which was a big breakthrough for them. And then of course in the last 3 to 4 years they've really gone into a different trajectory. तो हाउ बिग द रेवेन्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस राइट नाउ? So they would be doing so revenue numbers are probably company may or may not want to disclose, but sizable at this stage, गॉट like very meaningful for a company at this size and stage. वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक So they are profit making, they are doing good revenues, they have got good traction, and now getting into defense domain. The defense vertical is called Vayud. राइट, राइट। So Vayud जो उनका defense business है, that's also on its way now. And I think like this will be one of the breakthrough kind of companies to I think come from India in this category. 100% इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड। Totally. क्वाइट Because the emphasis again, there's no reason why we can't build this. राइट। I mean, our engineers are as good as anybody. You know, they're the same people who work in places like California or Singapore or anywhere else. Why can't they do the same work here? या There's, if you provide certain enabling ecosystem, the same thing can be done. And now we are doing that. That enabling ecosystem has come together, like I discussed. तो आई थिंक राजीव जी बहुत अच्छा एग्जांपल हुआ डीप टेक डोमेन का कि मतलब इंडिया में भी ऐसा काम हो रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ बिल्कुल और डोंट थिंक लाइक दैट। एब्सोल्युटली और ये हर डोमेन में हो रहा है। Right. मतलब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, ड्रोन्स के बारे में। ये सेम चीज़ आप देखेंगे ये ऐसी की ऐसी
thesis जो है you will find it visible in domain of space tech, Right. in domain of semiconductor chip design, in robotics. So these are all areas where, again, like we've traditionally had good human capital. Right. Just that the human capital didn't have avenues. Now they do. Right. So something like 20% of global chip design talent is of Indian origin. हज़ारों लोग जो हैं एनवीडिया में काम कर रहे हैं, इंटेल में काम कर रहे हैं, क्वालकॉम में काम कर रहे हैं, एएमडी और ब्रॉडकॉम में काम कर रहे हैं. I mean, the global capability centers, GCCs, which maybe Right. you and the audience is familiar with, the GCCs are employing thousands of such engineers in places like Bangalore and Hyderabad and Pune and this, that. Right. So, like, these are people who have been graduated from India, working in India, trained by MNCs. Many of them are saying, why don't I start a company now Yeah. and see what I can build? Yeah. And this is a repeating trend which I think is very, very underappreciated. Matlab, that's the most interesting part because we are still in the early innings of this type of sectors and हाँ, हाँ, tech बहुत being created. बहुत मतलब ऐसे वंस यू हैव बीन इन द फील्ड तो ऐसा लगता है कितना कुछ हो गया है. हाँ. But when you look out ahead, I think the road ahead looks like full of enormous scope and scale. क्योंकि अभी भी मतलब if you look at hard numbers, Right. where are we internationally? Actually, in all these industries, we are still very small. So and even the penetration within India is low. तो एक तो आप इंडिया में इसका विस्तार होगा और फिर आप एक्सपोर्ट्स के लिए भी कुछ करेंगे. Right. तो बहुत-बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन सकती है. तो एक और एग्ज़ाम्पल मैं बता सकता हूँ एक डीप टेक कंपनी का. ये पूना बेस्ड कंपनी है अनबॉक्स रोबोटिक्स. तो अनबॉक्स जो है इन्होंने एक ऑटोमेशन सॉल्यूशन बनाया है फॉर लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसेस फॉर रैपिड एंड प्रिसाइज एंड रिलायबल सॉर्टिंग ऑफ आइटम्स इन द वेयरहाउसेस. तो इसमें मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो जिस किसी ने भी ई-कॉमर्स में काम किया है या फिर वेयरहाउसेस में काम किया है या फिर उस इंडस्ट्री को स्टडी किया है, तो लोग समझ जाएँगे कि जो आइटम्स आते हैं, उनको ग्रुप करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर जगह शिफ्ट करने के लिए. तो वो जो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग का जो स्टेप है, वो ट्रेडिशनली बहुत एक लेबर इंटेंसिव स्टेप रहा है, कि इसमें वर्कर्स को आके मैन्युअली करना पड़ता है काम, कि अच्छा ये 2 आइटम जो है, दीज़ 2 शुड गो टुगेदर और दिस इज़ अ सिंगल आइटम व्हिच गोज़ टू दिस लोकेशन. सो द items have to be grouped together like that manually. So now what Unbox has done is they've developed a very, very nifty automation solution. And that automation solution really brings a level of speed, reliability, and precision in the operations which is unprecedented. Right. Like you just cannot achieve that with human effort. और ये भी एक चैलेंज है कि बहुत जगह आजकल वर्कर्स मिलते नहीं हैं. तो जैसे वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो हैं और या इवन जो ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वर्कर्स मिलते नहीं हैं. इनफैक्ट इंडिया इज़ नाउ इवन इन द ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट वी आर डूइंग, लाइक सप्लाई ऑफ वर्कर्स एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर labor intensive tasks is one of the things that we are negotiating for, because those countries need people. For Right. example, in food industry, in logistics industry, different types of assembly and manufacturing which they are trying to do, they don't have workers. So the gap which Unbox is filling in those economy is that they bring in a level of automation which helps them reduce like immigration requirements. And of course, immigration also, as you would know, has become quite a hot button subject. Political issue भी बन गया जब. बहुत जगह हो चुका है साइट. तो वो ऑटोमेशन आने से एक स्पीड प्रिसिजन तो आ ही रही है, उसके साथ-साथ आपको वर्कर्स की भी कम देने की ज़रूरत है. Right. तो अनबॉक्स एक्चुअली बहुत रैपिडली स्केल किया है लास्ट 1.5-2 साल में, सिंस वी इन्वेस्टेड इन देम. एंड दिस इज़ अ कंपनी व्हिच हैज़ नाउ गॉट 95% ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. Quite interesting. तो पहले इन्होंने एक, और ये क्लासिकल प्लेबुक बन रही है मेरे को लगता है, कि आप पहले इंडिया में एक सर्टेन फुटहोल्ड लीजिए, you find customers here, you scale to let's say $500,000 to $1 million in revenue. So 4 to 9 crores in revenue, 5 to 10 crores in revenue you get from India, and you refine and establish the customer proposition. And Indian enterprise buyers also, as you know, are very demanding. तो अगर आप इंडिया में कंपनीज को आप कन्विंस कर पा रहे हैं सोल्यूशन के बारे में, तो इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि at the cost and performance point at which Indian buyers are taking,
probably Western markets are slightly easier to crack. इंडिया में सबको सब चीप प्राइस पे अच्छी क्वालिटी चाहिए। सबसे बेस्ट सबसे लोएस्ट प्राइस में राइट और बहुत सेंसिटिव प्राइसिंग है राइट एंटरप्राइज लेवल पे भी मतलब people will always look at I can replace this with labor. राइट So even if there are certain challenges and frictions with getting the labor, trained labor and so on, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोगों का माइंडसेट ये है कि जो चीज़ सस्ते में हो रही है तो सस्ते में ही करना है, उसमें मशीन में क्यों खर्चा करें। तो वो पैरामीटर मीट करना एक्चुअली इंडिया में अपने आप में एक ट्रेनिंग बन जाती है। राइट और फिर आप अगर वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट जाते हैं या फिर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, तो देयर द पीपल आर एक्चुअली इन फैक्ट लेस सेंसिटिव ऑन दैट प्राइस पॉइंट। But as an Indian entrepreneur, you have trained yourself in a tough environment. राइट राइट आई थिंक दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ द मतलब इंटायर पॉडकास्ट में कि मेरे को बहुत सीखने को मिला पर्सनली, क्योंकि दिस इज़ अ स्पेस में तो क्योंकि ज़्यादा लिस्टेड इन्वेस्टिंग करता हूँ, एंड जो हमारी ऑडियंस भी है ट्राइब मेंबर्स की या स्टूडेंट्स की, तो काफ़ी लोग लिस्टेड स्पेस देखते हैं। पर इंडिया में भी ऐसे डीप टेक में बहुत काम हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं, एंड प्रॉब्ली फॉर आवर इकोनॉमी टू डबल फ्रॉम हियर दीज आर द टाइप ऑफ सेक्टर्स विच इवेंचुअली विल स्टार्ट फाइंडिंग देयर way into indices and the stock markets as well. Definitely. नहीं, and we have seen that in the India growth story of last 30 plus years. तो एक ज़माने में हमारे यहाँ को टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं थी, Right, प्राइवेट बैंक्स कुछ भी नहीं थे, right, एनबीएफसीज तो वाज अ बायवर्ड फॉर अ स्कैम, राइट? right, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years ago. right, There were no private lenders, there was no private telecom industry, there was no retail industry to speak of. आज के दिन में retailers have become sizable. And I'm talking about offline retailers, not just the e-commerce guys, but even the offline retailers are sizable है, मतलब whether it's Avenue Supermarts, Reliance Retail, these are huge businesses. So all of this has been built in last 15, 20 years. right. So if we now look out the next 10 years, what else is India going to create? What else is the Indian economy going to require? I think the answer will be that it will be high value added, IP driven, engineering goods driven companies will be a big part of it. Of course, there's many other categories. There's so much entrepreneurship going on in the country that in itself is a big story, I think. Right, कि हर एरिया में there has been a genuine shift in terms of entrepreneurship. And nowadays even on college campuses, it has become a genuine alternative कि लोग सोचते हैं कि मेरे को entrepreneurship करना चाहिए, अब मैं कर सकता हूँ। तो 10-20 साल पहले ये बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि लोगों ने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, मतलब हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में ऐसे हुआ है। We talked about deep tech listed companies. Of course, there's a whole universe of consumer tech listed companies, which have been built from practically nothing in 10, 12 years. And today, all of us are users of those services, and they are sizable in their own scope and impact right, in public markets. So I think that shift is a very, very secular shift. It is here to stay. And that market cap constitution will keep shifting in that direction as well. एक ज़माने में if we look at the Sensex from 1993 or 1995, one would see it probably being dominated by steel and cement. right, Now, steel and cement are still big players in the economy and sizable contributors in every way. But obviously, there are many other industries that have emerged. right. So I think the same thing is likely to happen. There will be many, many valuable companies in all these industries we spoke of in deep technology. And I think the other factor which really drives some of this is the shift towards having a sovereignty over critical tech. So there are certain strategic sectors, there are certain critical sectors that even government has identified. और गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इसमें हम डिपेंड नहीं करेंगे किसी ऊपर। Right. सेमीकंडक्टर्स इज वन ऑफ देम, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ देम, स्पेस टेक इज वन ऑफ देम। So a country which has sizable demand like that, right, and where that demand was being met by foreign suppliers for a long time, government is saying we are going to shift that buying into Indian providers, right, right, and that is on the order of lakhs of crores of rupees, trillions of rupees a year. So when that shifts into Indian economy, you can imagine the ecosystems which will come up, the value chains which will come up to support all of that demand. and also presents a huge wealth creation opportunity for investors who are Yes. prepared. For entrepreneurs who are looking to start businesses, and Yeah. of course for investors who are looking to invest in that category.
Right. I think this was a very helpful lay of the land of the entire deep tech landscape, Rajiv ji. Thank you so much for willing to do this. Hey, thank you for inviting me, Ishmohit. Right. I've been a long time admirer of your work and great to be with you today. Thank you so much, sir, for the kind feedbacks. And hopefully, जो पूरी audience है, whatever your key learnings were, do let us know in the comment section below. And जो basically राजीव जी के like social media handle है and like all about him, that is also there in the description box below. Thank you so much, sir. Thank you, Ishmohit.